Hello, young friends. Welcome to my YouTube channel. I am Group Captain A.K. Srivastava, a psychologist and mentor for SSB preparations. Young friends, I've talked in my various videos so much about the importance of imagination. Imagination plays a very vital role in the professional and social life of a military officer. And definitely, it is a faculty on which the selection boards hardly make any compromise. You have to prove the strength of your imagination through various tests. Talking about the psychological technique, so it tests the strength of your imagination through the thematic perception test. It's the most potent test, and it reveals about the level of your imagination, the expanse, the depth of your imagination so very well. We, the psychologists, have found most of the people who are unable to cross the bar in the psychological technique, they have performed very poorly in the thematic perception test, not because you are lacking the talent, you are lacking the merit, but you have restricted your imagination by deliberately choosing a path of dependence. So your originality is suppressed, your imagination doesn't come out forcefully. Friends, I know there are commercial academies, there are non-psychologist mentors who try to take a plunge in this field. And these mentors and the academies, they give you model stories. You start imitating them. You start copying them. And this is where your performance that goes down, conflicts are visible, and you are unable to show what exactly you are yourself. However, there are lot many candidates who de facto have weak imagination or inactive imagination. But why? What is the reason for restricted, limited, or inactive imagination? Friends, please remember that we are all born with these faculties, and these faculties like imagination, analysis, evaluation, they develop through the schooling by facing the various situations in life, and also one of the most important factor, that is how we relax and entertain ourselves. It appears very strange. आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन से किस तरीके से इमेजिनेशन प्रभावित होती है। फ्रेंड्स, होती है। हमारे पास इस समय इंडियन ऑडियंस के पास मोस्ट ऑफ द पीपल दे एंटरटेन देमसेल्व्स थ्रू सिनेमा और थ्रू टीवी। अब सिनेमा और टीवी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बल्कि मैं तो ये कहूं कि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हैं जो ओरिजिनल हैं। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, भारतीय सिनेमा का नया नया युग था। कुछ लोग आए, उन्होंने अपने आप को किसी तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित किया। दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन द फिल्म इंडस्ट्री बाय देयर टैलेंट ऑफ एक्टिंग and by their talent of singing.
But the next generation, they started imitating them. There are singers who have imitated Sehgal. There are singers who have imitated Noor Jahan. There are so many actors who imitated the actors of the previous generation. I don't want to name them. Even the lyrics, they were imitated. संगीत की धुनें चाहे किसी आंचलिक लोकगीत से या कभी कभी दूसरे फिल्मों से, दूसरी भाषाओं की फिल्मों से। अब एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आई डोंट वांट टू make some controversial statement about the quality of Indian cinema and its originality. मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी जमाने में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, रमैया वस्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया। अब ये शब्द रमैया है, कभी आपने हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में, हिंदी स्पीकिंग जो क्षेत्र है, कितनी बार सुना होगा? बहुत कम। और कभी कभी शायद किसी भजन में सुनाई दिया होगा तो दिया होगा। और वस्ता भैया, जो लोग तेलुगु जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे कि वस्ता भैया क्या होता है। और दक्षिण भारत के काफी, खास करके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, नामों के आगे, राम के आगे रामैया, कृष्ण के आगे कृष्णैया, या मैंगलोर क्षेत्र में चले जाएं तो अप्पा, करियप्पा। तो अय्या और अप्पा मूलतः साउथ के नाम हैं। वस्ता भैया अगर आप किसी तेलुगु जानने वाले से पूछेंगे तो ओस्तुना, आई एम कमिंग। इसी तरीके से टीवी की अगर हम बात करते हैं तो आज खास करके जिन टीवी प्रोग्राम्स की दे हैव गॉट अ वेरी वाइड रीच, आप देखेंगे चाहे रियलिटी शो हो, चाहे टैलेंट हंट शो हो, मैक्सिमम शोज में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इट माइट अपीयर वेरी वेरी हार्ड हिटिंग, लेकिन फैक्ट यही है। चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे अंताक्षरी का प्रोग्राम हो। अब आप कह सकते हैं कि अंताक्षरी तो ओरिजिनल है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि any English language or any other language has got that much of the tradition of antakshari. You may say we as the Indians we owned it. लेकिन अंताक्षरी में गाने कौन से गाए जाते हैं? क्या कोई ओरिजिनल गाना गाता है? तो फ्रेंड्स, आप किस तरीके से फन और एंटरटेनमेंट, उससे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? अगर आपने इमिटेशन, if you don't question imitation, if you don't ask for something new, your mind will be conditioned to imitate. You'll find nothing wrong in imitation. तो ऐसी परिस्थिति में आपकी अपनी ओरिजिनलिटी, आपकी अपनी इमेजिनेशन वो डॉर्मेंट हो जाती है, सो जाती है। ट्रस्ट माय वर्ड्स, वी आर ऑल born with some level of imagination. We are all creative by birth. आप बच्चों से पूछिए कि कोई कहानी सुनाइए, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कहानियां सुना सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं।
ये बात अलग है कि उसमें से आप उसका सर पैर ना ढूंढने की कोशिश करें. Those stories might be absolutely on the level of fantasy, but children can create it. This is a single example to prove my point that we are all born with imagination. We need to nurture it. By accepting the imitation, we suppress the originality, we suppress our imagination. Please remember that the psychologist tests your imagination using three basic parameters, three basic: originality, novelty and variety. ओरिजिनलिटी का मतलब क्या ये चीज आपकी अपनी है या आपने कहीं और से उठाई है. नॉवेल्टी का मतलब क्या नई है या रिपीटेड है, या पहले से इसका आपने ही इसका आविष्कार पहले से किया है. यू हैव क्रिएटेड इट इन द पास्ट एज वेल. और वैरायटी, वैरायटी का यह मतलब होता है कि आपकी इमेजिनेशन केवल एक डायरेक्शन, एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हो. जस्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, आपने श्रीलाल शुक्ला का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही एक कालजयी हिंदी का उपन्यास है, राग दरबारी. उसके ऑथर हैं. आप श्रीलाल शुक्ला की बाकी रचनाएं पढ़िए, अलग अलग थीम्स पर. और राग दरबारी जैसे थीम पर तो उन्होंने पहली बार लिखी. और उनकी अपनी रचनाओं में राग दरबार की बहुत बड़ा व्यंग्य है, लेकिन उनकी दूसरी रचनाओं से बिल्कुल ही अलग है. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी. तो कृपया मेरी इस बात को ध्यान दें कि जिन एक्टिविटीज से आपका मनोरंजन होता है, रिलैक्स करते हैं, वे एक्टिविटीज को आप थोड़ा कॉशियसली करें. यू मस्ट क्वेश्चन द ओरिजिनलिटी. नहीं तो माइंड क्या होता है ना, once you start accepting the imitation with the same mindset, then you start depending on any other source. फिर आप जाते हैं जब कहीं कोचिंग सेंटर में और कोई आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर मिलती है, अब आप चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि आपको तो इमिटेशन की आदत पड़ गई है. Then you tell your resource person, sir, please tell me what is to be written here in this picture. And that person also, to satisfy you temporarily without realizing what a harm he is doing, he gives you a story which he has been giving to various batches, and he will keep giving it to the future batches as well. So imagination के लिए जहां आपकी अपनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आप दूसरों से आइडियाज लेकर के उसको रिटेन कर लेते हैं. रिटेन करने का क्या मतलब होता है? देन यू मेमोराइज इट, देन यू रिप्रोड्यूस इट. हाँ, टू यू रिसीव, you retain and you reproduce. R and R model. Retention, friends, is the lowest mental faculty, whereas creativity or imagination is the highest cognitive faculty. You cannot repeat, you cannot impress the board, or you cannot assure the board of your imagination by reproducing something. Your memory, they are not looking for your power to retain. They are looking for your originality and creativity. So friends,
Instead of accepting everything, please start exploring. You appreciate only those things which are original. If it is not original, then you'll start depending on source. You start showing only the memory or the power of retention to prove your imagination, which the board is not going to accept it. So please, there are different do's and don'ts. Start questioning the originality of the ideas. Don't fall for the repeated ideas. If you start accepting the imitation, I'm sorry, your mind will not be in a position to produce something original. आज इतना ही. Thank you very much. This is the caution. Kindly take it seriously. God bless you. Happy preparations.